the next lecture is about the diversity in digestive structures in invertebrates. Students, mute your mic, please. So, in the multicellular animals, but simpler one, okay? So we will start it from the cnidarians. The gut is not complete. So how was their gut? Their gut is blind. Blind means closed, sac-like. So it is known as the gastrovascular cavity because it forms a cavity-like structure. Okay. So what is the opening? It has just one opening. One opening used for both the purpose, entrance and also for the exit. So it means that in the primitive multicellular animals, they do not have the complete digestive system. They do not have the complete digestive tract. Now the system, the incomplete digestive tract. How they have the incomplete digestive tract? They have just one opening for the entrance and for also for the exit. And the gut is blind, closed. So it is known as the cavity because it forms a cavity-like structure. क्या होता है बच्चे जब हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि हमारा गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम या हमारा इन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इनवर्टिब्रेट्स में देख रहे हैं तो हम इनवर्टिब्रेट्स ही में चेक करेंगे कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फाइलम्स में ये किस तरह चेंज हो रहा है और अगर चेंज हुआ तो कहाँ पे आके चेंज हुआ। जो हमारे पास सिंपलर मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे जिनमें नाइडेरियंस आते हैं, उनमें क्या था हमारे पास, उनमें हमारे पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का क्या मतलब है कि उनके पास सिर्फ जस्ट वन ओपनिंग थी, एक ही ओपनिंग है फॉर एंट्रेंस, वहीं से एंटर होगा वहीं से एग्जिट। दे डू नॉट हैव द एनस। एनस की बजाय उनके पास क्या है, उनके पास वो ब्लाइंड है, एंड उनका ब्लाइंड है, क्लोज्ड है। तो क्लोज जब सैक बनाता है तो उसने क्या बना दिया, उस क्लोज सैक से उससे कैविटी बना दिया। एनस कब आया, एनस जाके एस्कलेमेंथीस में आया, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एनस केम इन द एस्कलेमेंथीस एंड ऑनवर्ड, ओके। एस्कलेमेंथीस आया और उसके बाद ये एनस मूव हुआ। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, वैरायटी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है इन द इनवर्टिब्रेट्स। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, ओके। लेकिन दे हैव द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। बाइवॉल्व मोलस्क में देख रहे हैं कि मोलस्कन्स में जो हमारे पास एक सब फाइलम आता है बाइवॉल्व, दे हैव इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर, बट इनके पास क्या है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। दे हैव आल्सो द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन इनके पास क्या है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इंसेक्ट्स में क्या देख रहे हैं, इंसेक्ट्स में दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, बट दे हैव आल्सो द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। So on the whole we have divided on the digestive system in invertebrates in three main categories. हमने तीन main categories में इसको divide कर दिया। One is for the ciliated protozoans. जो ciliated protozoans हैं उनमें क्या है कि इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है और उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ दे हैव द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हुए वो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे करें। बाइवॉल्व के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बावजूद दे हैव बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी हम देखेंगे। देन इंसेक्ट्स में एक और मजे की बात आ रही है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हाँ है इनके पास, बट they have a complete digestive tract, okay। So we will
learn one by one here. You can see here a figure. Number one is about here Cnidarian hydra. Here you can see the incomplete digestive tract. Why? Because they have the just one opening at the mouth side, okay, which serve as for both for entrance and for exit of food and waste, okay. And they have some extracellular digestion also occur in the gastrovascular cavity and intracellular where inside the vacuoles. Okay, so they have extracellular and intracellular. Extracellular where in the gastrovascular cavity. Here the digestion is known as the extracellular, and when they came towards here in the vacuole, food vacuole, here it formed as an intracellular digestion. They follow intracellular digestion. When this phagocytic cell engulf food particles, when these phagocytic particles engulf food particle, this food particle, it is known as intracellular digestion. Okay. हमने सबसे पहले किस में देखा, सिनिडेरियंस में देखा. नाइटेरियंस में हाइड्रा की एग्जांपल है. दे हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, incomplete digestive tract. How? Because they have just one opening for the entrance and for exit. So where they follow the extracellular, here they follow the extracellular digestion in the gastrovascular cavity, and where and when the food vacuole enter in inside the, when the food become inside the food vacuoles, and when these phagocytic cells engulf food particles, then it become the intracellular digestion. Next is about the planarians. Okay, this is about the planarians. The vascular cavity in the planarian, for example, in the platyhelminthes, it is actually branches extensively. Okay, it is going to be branched here, gastrovascular cavity, and it is further branched here. Okay, it is branches, but it is also incomplete digestive tract with only one opening. Okay, when a planarian feeds, it sticks its muscular pharynx out of its mouth. Okay, muscular pharynx को क्या करता है, प्रोट्रूट आउट करता है, बाहर निकालता है, और फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है. ओके, सेम इज फॉर द एग्जिट. जब एग्जिट करना होता है तो सेम ओपनिंग इज यूज्ड फॉर द एग्जिट. थर्ड वन इज अबाउट द nematodes, about the annelids. So the annelids have a complete, as cleminthes have a complete digestive tract with the mouth, pharynx and anus. Mouth, pharynx and anus. So third one is about the insects. Here we have a grasshopper. It also follows a complete digestive system. A crop is present here, which is an expanded form, which is a swallowed form, which is involved in storage of food. Okay, we have read about the 4 different phylums of invertebrates: Cnidarians, Planarians, Ascleminthes, and Arthropoda are insects. So here we will discuss about the digestion in the protozoans. Depending on its feeding habit, that maybe autotrophic, it means that they are going to synthesize their own feed. Saprozoic, they depending on some nutrients surrounding them, or heterotrophic, that totally depend on some other feed.
in the protozoans, the ciliated protozoans are one which are going to depend on the other nutrition, other animal. So it is a good example of heterotrophic habit, feeding habit. So it has ciliated protozoans mean it have some cilia. So cilia moves. The movement of cilia is known as ciliary action. Okay. So what does cilia move? When the cilia move, it pushes food from the environment to its mouth, towards its mouth. Okay. So after the buccal cavity, the food will move towards the cytoplasm. Okay. The cytoplasm opens into the cytopharynx. It will form a pharynx-like structure, so it's known as the cytopharynx, which enlarges and then pinch off with the food containing the vacuole, known as the food vacuole. These all statements are going to be demonstrated here in this picture. You can see here that the cilia directs food toward the cytoplasm, toward the mouth. Okay. Then the food enters the cytopharynx. Here it is called as a cytopharynx. Okay. This structure called as the cytopharynx. So the cytopharynx having the food particles. Okay. Where a food vacuole forms and detaches from the cytopharynx. Now from here the cytopharynx detached from here and attached with the vacuole, food vacuole. Now here the excess water will leave this food vacuole. After the leaving of excess water, जैसे ही पानी छोड़ जाएगा ये, तो फौरन ही क्या हो जाएगा, लाइसोसोम एक्ट करेगा. इस फूड वैक्यूल पे कौन एक्ट करेगा, लाइसोसोम. लाइसोसोम कैसे एक्ट करेगा, अपने एंजाइम्स को डिलीवर करेगा. ओके. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक एंड अल्कैलिनिक डाइजेशन होगी. यहाँ पे अल्कैलिनिक पीएच अल्कलाइन होगा, एसिडिक पीएच होगा. तो आफ्टर दिस डाइजेशन क्या होगा, हमारे पास जो रेजिडुअल वैक्यूल्स बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम दिस वैक्यूल, फ्रॉम द साइटोपाइक. Cytopike is known also as the anus for excretion. Okay, I'm repeating this slide. When you can see here that the food particles are pushed by these cilia. Okay, the cilia are going to be pushed these food particles inside the cytoplasm. The structure here will form is known as the cytopharynx. Okay. This cytopharynx is going to be detached from there and now it have to be shed off extra water. इसके साथ पानी तो होगा obviously. पानी जब छूटेगा तो क्या होगा, लाइसोसोम एक्ट करेगा. लाइसोसोम की एक्शन जो होगा, लाइसोसोम एंजाइम का जो एक्शन होगा, ये दो किस्म की डाइजेशन करेगा, एसिडिक डाइजेशन एंड अल्कैलिनिक डाइजेशन. After this digestion, the food particles will break down. और जो रेजिडुअल वैक्यूल रह जाएगा उसको अब हमने एक्सक्रीट कराना है. एंड एक्सक्रीशन कहाँ से होगी, फ्रॉम द साइटोपाइक. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द साइटोपाइक. ओके. एंड इट इज ऑल अबाउट द डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन प्रोटोजोन्स. Now moving towards the bivalve mollusks. Okay. Okay, it is said about the bivalve. Bivalve is a class of molluscans. In the bivalve, the esophagus is not very long, it is a short. Okay, and esophagus is actually an opening towards the stomach.
And then midgut, hindgut, and rectum are also involved in the digestion. Further, the stomach have a crystalline style. I will show you in the diagram that the stomach have the crystalline style. Gastric shield and diverticulum regions, they all regions are involved in digestion. And where they present? They are present in the stomach. Diverticula is actually a blind ending, a blind sac that have to absorb and did the intracellular digestion. But by the blind ending sacs, it increases its surface area. While the midgut, hindgut, and rectum function in the extracellular digestion and absorption. I'm repeating all these as it is written here, or we have read here, that the molluscans, the bivalve molluscans, are suspension feeders, that they feed on the suspended particles that are suspended where? In the media. And what is the media? In the water. They depend on suspension feeding and ingest small food particles from the water. Okay. After the ingestion of food particles, they have a very short esophagus that open directly into the stomach. After the stomach, they have the midgut, hindgut, and rectum. While there are many structures inside the stomach for their intracellular digestion. What are they? Crystalline style. Okay, they have a rotation capability. Crystalline style have a rotation ability. They have a gastric shield and diverticulum region. Diverticulum region is an extra region above the stomach, and which is a blind structure. And the blind ending sac mean we are going to enhance the surface area for intracellular digestion as well as for the absorption. Okay, stomach के अंदर ही further हमारे पास तीन structures हैं, crystalline style, gastric shield और diverticula. Diverticula is साथ ही इसके अटैच होता है, और एक फोल्डिंग है जो फोल्डिंग क्या कर रही है, sac like फोल्डिंग है जो क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, एब्जॉर्प्शन के लिए भी, वहां से एब्जॉर्ब भी होता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए भी. जबकि क्रिस्टलाइन स्टाइल एक स्टमक के अंदर ही एक स्ट्रक्चर है जिसकी रोटेशन में जो रोटेट कराती है, और इस रोटेशन के होने की वजह से क्या होता है, इस रोटेशन की वजह से जो इंट्रासेलुलर है डाइजेशन है वो होती है. ठीक है, क्रिस्टलाइन स्टाइल की रोटेशन की वजह से इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एफिशिएंट बनती है. while the midgut, hindgut और rectum का फंक्शन एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में आता है. ऑब्वियसली डाइजेशन एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन बाइवॉल्व में 3 साइकिल्स पे डिपेंड करता है, फीडिंग, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन and intracellular digestion. Okay, here in this diagram you can see here the A, B, C, D and E. Okay, here it is crystalline style. Okay, this is the esophagus, this is the stomach, and in the stomach it is the crystalline style, it is the gastric shield, it is the diverticulum, and it is the midgut and it is the style sac. Okay, so extracellular and intracellular in a bivalve mollusk. When you see the first figure A in this slide, you can see here the extracellular digestion begins here before the food ingestion. Okay,
Before the food ingestion, by the dissolving of the crystalline style in the formation of fragmentation spherules in the stomach. ये जो आप देख रहे हैं ये fragmentation spherules हैं, ठीक है? So the extracellular digestion starts before the food ingestion. Food ingest किसने की था? By the dissolving of the crystalline style, नहीं crystalline style के dissolve होने से पहले in the formation of fragmentation spherules. ये spherules जो बनते हैं इनसे पहले ही extracellular digestion start हो जाती है. As food enters the stomach, ये आप देख लें जैसे ही stomach में enter हुआ, here जैसे ही फूड स्टमक में एंटर हुई ये स्टाइल क्या है? ये रोटेटिंग कैपेबिलिटी है. इट हैज a rotating capability, so the rotation of style starting and the enzymes released by the gastric shield, ठीक है, mechanically and enzymatically break it down. Okay, अब फूड एंटर हो गई है. So the function of this gastric shield and this style is started now. इस स्टाइल ने क्या कर दिया? इस स्टाइल ने रोटेट होना शुरू कर दिया यहीं पे, ठीक है, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे जो इसकी रोटेशन होगी, इसकी रोटेशन से मैकेनिकली इसकी ब्रेकडाउन होगी और जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं इस गैस्ट्रिक शील्ड से उसकी वजह से एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन होगी. सो हियर we can see that mechanically and enzymatically the breakdown of these food particles started here in the section 2. ठीक है, going towards the picture number C. Here the small particles then move into the digestive diverticulum. Here you can see these small particles are going towards this diverticulum. Okay, for intracellular digestion, यहाँ पे क्या हो रही है? Intracellular digestion होगी. Now going towards the figure D, here a progressive passage of food particles from the stomach to the digestive diverticulum follow the feeding. जैसे ही यहाँ से क्या होगा? स्टमक से डाइवर्टिकुलम की तरफ फीड जाने लगेगी तो यहाँ पे टोटली फीडिंग स्टॉप हो जाएगी. यहाँ से भी फीड चल रही थी, यहाँ से भी फीडिंग हो रही थी. यहाँ पर इस फिगर में यहाँ इसोफेगस के पास कोई भी फूड मटेरियल नहीं देखेंगे. क्यों? जैसे ही डाइवर्टिकुलम की तरफ फीड जाएगी तो फीडिंग कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी. अब आप ई की तरफ जाएं, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज. ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग फेज द स्टमक एम्प्टीज. अब स्टमक ने अपने आप को एम्प्टी करना है, ठीक है. क्यों? क्योंकि फॉर द एक्सक्रीशन एंड स्टाइल रिफॉर्म, स्टाइल अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी. फ्रेगमेंटेशन स्फेरुल्स अपनी जगह दोबारा आ जाएंगे. द मूवमेंट ऑफ दिस इज गोइंग टू, ये जो अपनी जगह दोबारा आएंगे, the reformation of these structure is mean that they are ready for the next stage, next cycle. Got my point? I'm repeating all these. Here it is about the extracellular and intracellular digestion in a bivalve mollusk. अच्छा बच्चे, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं that you can't hear me. मैम सुन सकते हैं. बच्चे can you hear? मैम सुन सकते हैं. कौन बोला है बच्चे? मैम मैं इस्मा. Can you hear me? इस्माब आप सुन रही हैं? मित्रा आप सुन सकती हैं? यस मैम. इस्माब भी सुन सकती है, इकरा भी मुझे सुन सकती है. यस मैम सुन सकते हैं. और बच्चे? यस मैम. हनफ आप मुझे नहीं सुन Yes, सकती है? ma'am. हबीबा राजा आप? यस शायद मैम. मेरा सुभानी भी मुझे सुन सकती है. हमारी आवाज. अच्छा जोया, it seems that there is some net issue at your end. Okay, आपकी तरफ नेट इशू है. Okay, जोया को मुझे मैसेज आया कि she couldn't hear me.
जोया को मुझे मैसेज आया, she couldn't hear me. It means there is some net issue at Zoya's end. जोया की तरफ कोई इशू है, मेरी तरफ नहीं है, ठीक है? So we are discussing about the extracellular and intracellular digestion in a bivalve mollusk. Bivalve mollusk means bivalve is a class of molluscans, phylum molluscans. So when you are studying about the digestion, extracellular and intracellular digestion, we have a pictures here, and about the picture number A, we can see that here the extracellular digestion begins. Where? Before the ingestion, food ingestion. Food ingestion by the dissolving of crystalline style. Crystalline style have to move, and the formation of fragmentation spherules. They are the fragmentation spherules. They are also involved in the digestion, intracellular digestion. So as the food enters the stomach, okay, as the food enters in this stomach, the function of style and gastric shield is going to be initiated. How they started their function, how the style is going to start their function, how the gastric shield start its function. Style started their function by rotation, okay, and gastric shield started its function by releasing the enzymes. So it means that they are going to break down their particles by mechanically and enzymatically. Enzymatically from gastric shield and mechanically by the rotation of this style. ये इसने रोटेट करना है और इसने एंजाइम्स रिलीज करने हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रही है हमारे पार्टिकल्स की, हमारे फूड पार्टिकल्स की, वो किस तरह हो रही है? वो दो तरीके से हो रही है, मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली। Moving towards the C figure, the small food particles now starting to enter in this diverticulum. Okay, when they are going to enter this diverticulum, it means that the feeding is now completely stopped. You couldn't see here any of the food particles that is going to be entered from this esophagus, as in the picture C. आप पिक्चर सी में देखिए, आपने इसोफेगस के करीब देखे ना फूड पार्टिकल्स, इट मीन्स दैट अभी तक स्टमक से डायवर्टिकुलम की तरफ नहीं गया। जैसे ही तमाम के तमाम फूड पार्टिकल्स डायवर्टिकुलम की तरफ गए, इट मीन्स दैट फीडिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीट सीज, कंप्लीट स्टॉप। अब जो फीडिंग है वो नहीं होनी। लास्ट स्टेज इज अबाउट द resting stage. It is known as the resting phase. Why it is known as the resting phase? Because all the structures of the stomach have to reform its structure. अपनी reform पे वापस आना है। किस किस में? Stomach is now going to be empty. No feed is here. And style reform its structure. style अपनी जगह पे आ चुका है और fragmentation spherules अब दोबारा बनना start होंगे. Why they are going to begins to form again for the cycling the next digestive cycle. Okay, got my point? So students, it's all about the today lecture. So here we have read about the diversity in digestive system structures in vertebrate, and in this lecture we cover the digestion in protozoans, ciliated protozoans, as well as in the molluscans bivalve. And in the next lecture, inshallah, we will discuss about the digestion in the insects. So when we discussed about the digestion in the multicellular and simpler one, so we can say that they have the incomplete digestive system. Okay, when we are discussing about the different systems, we will see that the systems are going to be started in the lower class and then they are going to be advanced in the higher class. ठीक है, जैसे हम अपने आपको एग्जांपल देखें तो हम बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो हम एडवांस हैं, ठीक है, हम एडवांस हैं इन और नर्वस सिस्टम, इन और गैस्ट्रिक सिस्टम, in our excretory system, in our
रेस्पिरेशन सिस्टम, जो भी आप सिस्टम देखेंगे तो उसमें हम एडवांस हैं अकॉर्डिंग टू आवर हैबिटेट, जहाँ पे हम रह रहे हैं। हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स की और सिंपल वन की, तो हम ये देखेंगे कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो वहाँ कैसी है, वो वहाँ पे ब्लाइंड है, इनकम्प्लीट है। और उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव अ ब्लाइंड एनस। एनस ब्लाइंड है, एनस क्लोज्ड है, और एनस ने कैसी स्ट्रक्चर बना दी है? सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दी है। और ये कब जाके कंप्लीट होगा? ये हमारे पास कंप्लीट होगा एस्क्लेमेंथीज में, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है। तो हमने आज 3 मेन कैटेगरीज देखी हैं प्रोटोजोन्स में विद द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन लिखता है। बाइवॉल में हमने देखा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी देखी है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखी है। और थर्ड वन है इंसेक्ट्स में, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। Here we have read about these. First is the Hydra, second one is the Planaria, third one is the nematodes and insects. First two are the incomplete digestion with having the just one opening for the exit and for entrance. Okay, for entrance and exit, just one pore is utilized. While in nematodes and insects they have anus for excretion and mouth for insertion of food. Okay, for engulfing of food they have mouth, and for excretion they have a anus. So it means that they have a complete digestive tract. So discussing about the protozoans, they may be autotrophic, saprotrophic, saprozoic, or heterotrophic, depending on their environment. So when it is studied about the ciliated protozoan, that it means that ciliated means they have some cilia, and what the cilia does, cilia propel food towards their mouth. It means that ciliated protozoans are heterotrophic in feeding habit. Okay, the cilia move its food towards the cytosome, and towards the cytosome it form a vacuole. That vacuole detach from that cytoplasm, and movement of this vacuole towards the body, towards the intracellular structure, they form two types of digestion. One is alkaline, the other one is acidic. After this digestion, the residual vacuole excrete through the cytoplasm. Here in this diagram, you can see easily about the food particles, how they are going to be engulfed by a protozoans, ciliated protozoans. Then cytopharynx is formed. Then how the water is going to be shedded off. After the shedding of water, extra water, the lysosome act upon this vacuole. Alkaline and acidic digestion is going to be started, and after this digestion, the residual vacuole is going to be excreted out through this cytopipe. So discussion about the bivalve mollusk, as they are the suspension feeders. So suspension feeders, what they did, they feed on small food that are suspended in the water. So they have the different structures within the body, within their digestive tract. They have the esophagus, which open into the stomach, have midgut, hindgut, and rectum for excretion. And similarly, they have some extra structures in the stomach, having the crystalline style for mechanically digestion, gastric enzyme for enzymatic, diverticulum region for absorption and increasing the surface area for the intracellular digestion. Here also having a resting phase. Resting phase is also a preparative phase for the next cycle. This is a pictorial diagrammatic representation of all this feeding habit, digestion in the bivalve mollusk. First one is about when there is no food, they have just a fragmentation spherules and style. Okay. Next, when the food is going to be engulfed by this molluscan bivalve mollusk,
the food particles are going towards this style, this crystalline style, and crystalline style started its rotation for the mechanical breakdown, and gastric sheet is going to be release enzymes for its enzymatic activity. After the digestion, after its work mechanically and enzymatically breakdown, the food is going towards the diverticulum. Okay, this diverticulum, when all the food going towards the diverticulum, it sees the feeding habit. Okay, it gives the message that there is no need of more feeding. So after this absorption and intercellular digestion, completion of this intercellular digestion, the structures of the stomach is going to be reformed. How they're going to reform? The crystalline style are going to come to its own form, and and there is no fragmentation spherules that are seen here in the A. It means that it is known as a preparative phase. That means now the cell is going to start synthesize its fragmentation spherules for for the digestion of the next cycle. So students, this is all about the today's lecture. Okay.